Welcome to Polaris 2020. In this episode, we'll be discussing about 10 major telephone etiquettes that should be given priority during the course of any professional calls. Now, there are two different patterns of calls that we get to see in our day-to-day life. The first one is regarded as personal call, and the second one is known as professional call. Now, when you talk about personal call, there is no hard and fast rule. You can talk the way it suits you. But the same cannot be spoken about in regards to a professional call. When you get involved in a professional call, there are certain specific rules and regulation that needs to be implemented and respected. Therefore, we need to understand this concept in its totality, and keeping in mind this fact, we have decided to prepare a video. So kindly watch this video till the end. I am pretty sure this is going to help a lot of people who are into this kind of profession, whereby they are required to either make professional call or, for that matter, receive professional call. So let's get started. The first point that we need to understand, or the first telephone etiquette that we need to concentrate, is the fact that whenever you receive any professional call, you have to receive it within the first 3 seconds. यानी कि उसको आप एक बार से ज़्यादा रिंग होने मत दीजिए. पहली बार जब रिंग करे उसके फ़ौरन बाद आप उसको रिसीव किया कीजिए. उससे सामने वाले को ये पता चलता है कि जिसके साथ वो बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक अटेंटिव इंसान है. अगर आपने ज़्यादा रिंग करने दिया तो एक गलत मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाता है. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. एटिकेट नंबर 2, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन. जब आप बात करें तो माइक्रोफोन को इस तरह से पोजीशन करें कि वो ज़्यादा मुँह आपके मुँह से ज़्यादा दूर भी ना हो और ज़्यादा करीब भी ना हो, और बातों को जो आप क्लियरली बोल सके. अगर बात क्लियरली नहीं कर पा रहे या सामने वाले को क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, so this is going to cause a disturbance of sorts, and perhaps it can lead to miscommunication as well. So this is another very crucial factor which needs to be taken into consideration. Avoid using speaker phone. This is rule number 3. यानी कि स्पीकर फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए. फ़ोन के स्पीकर को ऑन मत किया कीजिए जब आप प्रोफेशनल कॉल ले रहे, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर बैकग्राउंड में कुछ साउंड है तो जिनके साथ आप बात कर रहे हैं उनको वो साउंड भी सुनाई देता है और की वजह से उनको डिस्टर्बेंस भी हो सकती है. तो इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू पुट ऑन द स्पीकर फोन while interacting with somebody during the course of a professional call. Next point, which is very important and which perhaps holds the key out here, is the fact that use professional language during the course of professional calls. आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कीजिए और इस तरह से बात कीजिए कि सामने वाले को जो आपके साथ बात करके अच्छा लगे. दैट मीन्स यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बी पोलाइट, एंड यू हैव टू मेंटेन द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विथ प्रोफेशनलिज्म. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो वो प्रोफेशनल कॉल जैसा साउंड नहीं होता है और सामने वाले को एक नेगेटिव इंप्रेशन मिलता है. तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कॉल ले रहे हैं तो आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कीजिए. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. द नेक्स्ट एटिकेट which can be regarded as extremely important in the context of a professional call is that whenever you interact with somebody over telephone, you have to sound cheerful and positive. By any chance, if you are giving the other person an impression that you are not fully into that discussion or you are not serious about that discussion, and obviously the other person will also not take that call very seriously. So if you want the other person to get involved in the discussion, and if you want to extract some information from that person, then it's important for you to have that zeal in that discussion. You have to show that zeal, you have to show that interest, and that is very important, because until and unless you are doing so, the discussion will perhaps not qualify as a meaningful one. अगर आप cheerful sound नहीं कर रहे तो सामने वाला भी उस बातचीत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, और ऐसी सूरत में जिस पर्पज़ के लिए आपको उनको आपने कॉल किया या फिर उन्होंने शायद आपको कॉल किया होगा, वो पर्पज़ अचीव नहीं की जा सकती है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को हम ध्यान में रखें. देन कम्स रूल नंबर 6. नाउ दिस इज़ अबाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द पर्सन विथ हुम यू आर इंटरेक्टिंग बिफोर पुटिंग हिम ऑन होल्ड. अगर आप किसी कस्टमर के साथ या किसी के साथ भी प्रोफेशनल कॉल में इन्वॉल्व हुए हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उनको जो है आप
होल्ड पे रखने से पहले परमिशन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने परमिशन लिए बिना ही होल्ड पे रख दिया तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो उस कॉल को काट दे, या फिर उनको यह लगे कि जिसके साथ वो बात कर रहे हैं वो इंसान उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, या फिर उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है। सो इट्स अ वेरी बेसिक कर्सी. You are talking to somebody, because of some reason you have to put him on hold, seek his permission, go ahead, clarify the thing, come back, thank him for staying on hold, and then you carry on with the discussion. Now, this point needs to be given utmost importance. Then comes etiquette number 7. Listen as actively as possible. You have to be an attentive listener during the course of professional call, and you have to take notes. अगर सामने वाला कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको जो उस नोट को जॉट डाउन करना पड़ेगा, ताकि उस कॉल के बाद अगर आप उसको रिव्यू करें तो जो इसका की पॉइंट्स था उस कॉल के दौरान, जो भी आपको की पॉइंट्स मिले वो अगर आपके कॉपी में जॉट डाउन किया गया है तो आप दोबारा उसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं और उसको जो अच्छे से स्टडी करके उसका एनालिसिस किया जा सकता है। तो जो लोग कॉल के दौरान अटेंटिवली बात नहीं करते तो उनसे काफ़ी कुछ मिस हो जाती है और जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। So if you are getting involved in a professional call, it's important for you to focus it as hard as possible. Make sure that you are attentively listening and try to take notes, because that is another important aspect, and that's how you can make the call very productive. If you are not doing so, then perhaps chances are there the call will not be very productive at the end of the day, and it will perhaps not serve the purpose for which it was initiated. जिस वजह से उसको शुरू की गई थी या जिस वजह से कॉल किया गया था वो कारण जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। नंबर 8 एटिकेट, नेवर गिव फेक एश्योरेंस टू द कस्टमर। आप कोई ऐसा एश्योरेंस मत दीजिए जिसका सच्चाई के साथ कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज इफ़ यू आर कमिटिंग यू शुड बी एबल टू फुलफिल इट. यू विल हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इफ़ यू आर ऑफिशियली कमिटिंग समथिंग. सो अगर आप श्योर नहीं हो तो कमिटमेंट मत दीजिए. गलत कमिटमेंट देने से ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को बहुत नुकसान होता है. इट हैम्पर्स द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, इट्स बेटर टू बैक ऑफ. Number 9 etiquette. Never ever interrupt when the customer is speaking. Let him express his point of view. Provide him the necessary room by virtue of which he can express his point of view. Because if you are doing so, you will come to know exactly where lies the problem, and to a great degree you would be able to figure out how it can be solved. So if you want to gauge the entire thing in its totality, it's very important that you should let the customer express his point of view in a free and fair way. बीच में रोकने टोकने से जो है आपको बहुत सारी जानकारी मिलने से बाधा पहुंचेगी या आप उस जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे. नंबर 10 एटिकेट, शो एम्पैथी. अगर कस्टमर ये कह रहा है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज से खुश नहीं है, ही इज़ डिससेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट अप यू गॉट टू एपोलोजाइज. टेल हिम दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, and if I am in your place, perhaps I will also feel the same, but I assure you sir or ma'am, I will personally look into this matter and do my best to resolve it at the earliest. यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूँगा. इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूँ. So this video was about 10 important etiquettes that needs to be followed and respected during the course of discussion over टेलीफोन. सो जो लोग भी इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है. सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग Polaris 2020. थैंक यू.